Anji, good morning, students. Good morning, sir. We have got just 18 students. Why? Why is it so? बाकी क्लास क्यों मॉर्निंग नहीं लगा रहे भाई? कुछ आइडिया है? Hmm? Any idea why others are not attending the class? चलो कोई नहीं. Last time we had discussed basic input-output operations. Uh, I had told you that all input-output is done through streams in case of C++, and the most commonly used operator objects are C in and Cout. Cin is for reading the values and Cout is for displaying the values on the console. So today we'll start with operators, which are very important. So what are operators? Basically, they perform some kind of operations on the operands passed to them, right? I'll repeat, operators are something which performs some operation on the operands passed to them. As you can see, we have different types of operators here: arithmetic, logical, relational, assignment, increment, decrement, comma, conditional, bitwise, special operator, and insertion and extraction. When we had discussed this input output, we had discussed about these insertion and extraction operators. So we'll discuss the all other operators today. So here is a set of arithmetic operators: plus, minus, or plus is for addition, minus for subtraction, multiplication, division, and modulo. That is for finding the remainder. Now, something very important I want to discuss with you, that the in case of operators, there is a term called precedence, which matters a lot. We have two things related with precedence and associativity. These are the two very important terms related with operators. Precedence means which operator will be given preference in an expression. Associativity means order of evaluation. Let us take up a very simple example. Suppose there is some integer a is equal to 3 divided by 2 multiplied by 2. Any idea what will be the answer? Any idea what will be the answer of this? 3. 3. Okay. Anybody else? Anybody else? What's the answer of this? बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंट भी हैं कि बस ज्वाइन करके सो गए? So 3. Sir, 3 है 1.5 into 2 is 3. Okay. Anybody else? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ 3 ਹੈ. ਅਗਰ 3 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੋ. सर प्रेसिडेंस दोनों की सेम है तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. Okay, very good. When the precedence is same, then associativity works. Like these two, multiply and divide, they have same precedence, right? Precedence same means दोनों को equal preference मिलेगी. जहाँ precedence same हो वहाँ associativity काम करेगी. Like in this case, the order of evaluation will be from left to right. Okay, this on this point you people are correct. कि precedence same है तो associativity काम करेगी. But do you think the result is 3? Okay, let's try this here. Let's try this thing here. Int a is equal to 3 divided by 2 multiplied by 2. Cout a.
std. Let's run this. And look at the answer. Answer is 2. Can anybody explain why? Why is it 2? Anybody? Why the answer is 2? Sir, 3 divided by 2 1.5 ਹੁੰਦਾ but ਇਹ integer data type ਹੈ ਤੇ 1.5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 1 ਲਏਗਾ point ਤੋਂ ਬਾਅਦ consider ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ This is 1 Piyush. into 2 2 ਬਣੇਗਾ This is Piyush. Okay, very good, Piyush. yeah, You are absolutely yes right. sir We need to consider the expression here. All the values are integer here. When all values are integer, it means the expression is integer. So order of evaluation, since both of them have same precedence, then associativity will work. So first 3 divided by 2. Since it is both of them are integers, the result will be integer. So it will not be 1.5, it will be 1. Into 2, it will become 2. That's why the answer is such. Okay, if I write 2 by 3 into 2, what's the answer then? 2 by 3 into 2. Anybody? These are the basic things, very basic things. 0 आएगा sir Zero. answer Zero, sir. Zero. I. Very Zero, good. sir. Because 2 divided by 3 will be 0. It will not be 0.66 or something, right? It will be 0. So multiplied by 2, it will be, the final result will be 0 only. So we can see it here. Here, result is 0. And one more, into 2 divided by 3 is how much? Yes, anybody? 1. Very good. It will be 1. 2 into 2 is 4, divided by 3 is 1. Okay, now let's go back to the very first one. And okay, I am making it 2.0. So what is the data type of 2.0 now? What's the data type of float 2.0? float sir. Float. Float, sir. Float. Okay. These values are called literal values. Similarly, if I write character A, this is a literal value. 2.0 is a literal value. 3 is a literal value. When we have integer type of literal values, then they are treated as integers. But when we have real type of literal value, it is not treated as float, it is treated as double. Okay? It is treated as double. On the way, I'll give you an example where it will be proved also. But for the time being, don't forget that real literal values are treated as double, not as float. So, okay, what's the answer now? Anybody? Answer is? Sir, answer is still 2. Okay. Anybody else? Anybody else, bache? Three, sir. Okay, you're saying 3. Why? Can you explain why? Why it will be 3? Vasu, why will it be 3? Reason भी बताओ. Why will it be 3? Huh? 2 होएगा sir. 2. Okay. I had told you that if all the values are integer, expression will be integer. If there is some real value like here 2.0 is there, expression will become double. But there is something else to it. Within this expression, there is a sub-expression. This is a sub-expression. So how will it be evaluated? First, 3 will be divided by 2. This sub-expression is integer. So again,
it will result into 1.5 only. No, sorry, 1 only. So 1 into 2 will be 2. We can check the answer once again. Answer is 2 because this sub expression is still integer. But if I make a small change here, if I make a change here and let it be simply 2, then this sub expression, this particular sub expression, it will become float or double. It will become double, and now the result will be anybody? 3. Result will be 3. Look here, I'll explain it again. Now this sub expression, since it is containing a real value, it will be treated as double expression. So when you will divide 3 by 2.0, it will be evaluated to 1.5, not 1. So 1.5 is a double value. Into 2, it will become 3.0. Since a is integer, it will get only 3. Is this thing clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. So there were two things to be understood. First, real literal values are always treated as double. I'll prove you a little later about that. We'll discuss it. And precedence of operators. If precedence is same, then associative works. And how an expression is evaluated totally depends on what kind of parameters we are passing, what kind of operands we are passing to it. See, with minor changes, you can see the result has changed a lot. We just converted 2 to 2.0. We have made it double. This expression will become double and result will be different. So you need to be very careful about this thing while evaluating or while writing any such expression. Okay, coming back to operators. Okay, I won't be discussing all the arithmetic and all other operators. We will be discussing just a few. So logical operators. Second category is logical operators. Not when you want to negate something as a single operand which reverts its value. And logical and when you want to combine two or more conditions, then we use and. Or when we want to evaluate one of the two conditions, when we want it to, when we are checking for one of the two conditions to be true, then we use or. When we are using and, then both the conditions should be true or both of these should be false. We'll discuss it in detail a little later. Then we have this is logical operator. Okay, here have a look at this. 8 is greater than 5. It will return true or false. Okay, before discussing that, let me share you something else with you. We have two values, true and false. And say we have 0 and 1. Of 0 and 1, these two values, which one is true? 0 or 1, which one is true? So Anybody? 0. 1 is 0 is true. The other one is saying 1 is true. ऐसा कैसे हो गया? 1 true is a 0 false. Sir, See, 1 true. false means 0. True means all other values. Okay, even if it is 1, it is true. So let's come here once again. 8 is greater than 5. Is it true? Is it true? Yes. 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 So 1 or so it will return this will return 1. Okay, 1 or 6, both of them are true is equal to 2. Will it be true or not? Will it be true? Mm. False. False क्यों होगा बच्चे? I'm writing it here. It is if 8 is greater than 5.
It is true. Why is it true? Let's discuss it once again. Okay. Let's discuss it once again. 8 is greater than 5. Is it true or not? It's true, right? So it will be evaluated to 1. 1 or 6, both of them are true. So it is true. Is equal to 2. 2 is also true. I told you that 0 is false, everything else is true. So it will be evaluated to true. If I make a small change here, will it make any difference? Anybody? Will it make any difference? Anybody? फिर false हो Yes. जाएगा. False हो जाएगा. False हो जाएगा. Yes. Prerna and Rekha. Yes, You sir. are saying Both false are हो जाएगा. false. Okay, listen carefully. 8 is Sir, less than true 5. कि both are false, that it's a true value. Just a minute. 8 is less than 5. Is it true? No, it is false. False means 0, right? 0 or 6. 6 तो true है. दोनों में से एक true होना चाहिए. So 0 और 6 दोनों में से एक true हो गया. It is true. Value true आनी चाहिए. अब ये false है. Who will explain this now? Who will explain समझ this? नहीं आया सर. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. आप पहले बताओ. Some of you were saying false. तो false कैसे आएगा? सो बिकॉज उसने कहा था अगर एक ट्रू होगा और अगर एक फॉल्स होगा तो वो ट्रू होगा. अब इसमें दोनों ही फॉल्स हो गए हैं. वैसे दोनों false कैसे हुए? सो 6 is not equal to 2 and 8 is not smaller than 5. Very good. These are two different conditions, right? This one and this one. उनको हम और कर रहे हैं. और का मतलब है अगर दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू होगा. अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. तो 8 is less than 5. This is false. 6 is equal to 2. ये भी false है. दोनों false हैं तो it will print false, not true. Okay? So it is a simple way of checking it. अच्छा, इसको अगर मैं कर दूं not equal to 2. 6 is not equal to true. ये true हो गया. It's true now. 6 is not Yes, equal sir. to 2. Yes, Right? sir. Now first is false, second is true. तो ये फिर से true evaluate करेगा. First is false, second is true, so it will evaluate to true. क्योंकि दोनों में से अगर एक भी true है तो वो true हो जाएगा. ये clear हो गया बच्चे? Yes, sir. अभी यहाँ and लगाते हैं. And लगाने से क्या होगा? There is something else to it. We'll discuss a little later. First is false. And के केस में क्या है? If both are true, then it is true. If even one is false, it is false. And का meaning यही हुआ ना, दोनों true होने चाहिए. First is false, second is true, then it will evaluate to anybody. False. It will evaluate to False. it will evaluate to false, right? So if I write it here, if I change it, both are true, it will evaluate to true, right? And if I change it here, first is true, second is false, it will again evaluate to false. Okay. And we have relational operators. We have 6 relational operators: equal to, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, and less than equal to. On the way, we'll be using all these operators. So here are some examples. 7 is equal to 5. It evaluates to false. And be very careful about using these signs. When you are equating, right, when you are evaluating, then you will use double equal to. But if you are assigning some value, you are writing a is equal to 5. When you are assigning value of 5 to a, then you will use single equal to. Be very careful about that. Okay, then
7 is equal to 5, it will evaluate to false. 3 is not equal to 2, it will evaluate to true. 5 is less than 1, it is false. 5 is greater than 4, it is true. 6 is less than equal to 5, it is false. 6 is greater than equal to 6, it's true. So this is how the evaluations will be done. So this is the assignment operator. अगर double equal to use कर रहे हो, this is for checking equality. If you want to assign some value, तो single वाला use होगा. Okay, and you can use compound assignment statements also, like this. Plus is equal to. Now, what is the meaning of this? Let us see. If I write integer a is equal to 10, b is equal to 20, or something like that, and here I'm writing, let there be one more, c, and here I'm writing c is equal or plus is equal to, let it be a, sorry, a plus is equal to b. This evaluates to a is equal to a plus b, right? Similarly, b is minus is equal to a. This will evaluate to b is equal to b minus a. We can use compound assignment statements. Okay. And you can use arithmetic operators, logical operators, comparison operators, and some bitwise operators also. Okay. Then increment and decrement, something very, very important. I'm writing here some value, some expression, integer a is equal to say 10, and then I'm writing a plus plus, and I'm writing plus plus a. Is there any difference between these two? Is there any difference between these two? Yes, sir. Okay, anybody Yes, else? sir. What's the difference? What's the difference? Post increment. एक पोस्ट इंक्रीमेंट है और एक प्री इंक्रीमेंट है. This is what you want to say? Yes, sir. हाँ, ठीक है. पर आंसर आपका गलत है. Both of these in this particular situation are equal. They are same. I'll explain. Don't get confused. Okay. I'll explain why these are equal. See, I am writing plus plus a. See out a. What will be the answer? What will be the answer here? Anybody? Yes. 11. Answer will be 11. Let's run it. Answer is 11. And what will be the answer now? I have changed it. Now this is post increment. What will be the answer now? Same 11. The same 11. तो आपने different का था. 11. But you said these are different. दोनों केस में 11 आ रहा है. Now try to understand. Try to understand. This is something again very important. When we use increment or decrement operator in isolation, these expressions are isolated expressions, right? तो दोनों में कोई difference नहीं है. There is no difference at all. आप for for I is equal to 0, I less than say 10, I plus plus. Normally we will write like this. इसको अगर plus plus I कर दें, it won't make any difference at all. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में से. Whether you are writing plus plus I or I plus plus, they are just the same. कोई फर्क नहीं है. Difference कब होता है? I repeat. If post increment or pre increment, these two are used in isolation, then there is no difference. They will make a difference only when they are part of an expression. Now, what does that mean? Let's write B here. And here I'm writing B is equal to
now it will make a lot of difference. Just look at it. A will become 11, B will remain 10. Why? Why is it so? Because this operator is post increment. Post increment means first use the value of A, since it is part of an expression now. It is not an isolated expression. Value of A will be assigned to B, which is 10. After assignment, A will be incremented. A will become 11. But if I write here pre-increment, right? If I write pre-increment, then have a look, what will be the value? Both of them are 11. Pre-increment means increment the value of variable or operand and then assign it to some other operator or to some other variable. So now both of them are different. Otherwise they are not different. So let us take up a simple exercise here. If A plus सर एक बार दोबारा तो रिपीट करिए जी okay, in case disconnect हो गया तो दोबारा connect कर लीजिए. Okay, what I was saying, अगर A expression कल्याण यूज किए जाते हैं, आइसोलेटेड यूज किए जाते हैं, फिर दोनों च कोई फर्क नहीं है जिवें आपां देखिया सी. इस केस च भी A 11 हो जाएगा, इस केस च भी 11 हो जाएगा. पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ b is equal to ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ b is equal to, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ because now they are part of an expression. So this is post increment. Post increment ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10, वो यूज हो जाएगी मींस वो b ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 10, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 11. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ. ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ 11. ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ b ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ 11 ਹੋ ਜਾਣਗੇ. As you can see here, let me write it again. देखो इतने प्री इंक्रीमेंट यूज करया है, इस करके दोनों वैल्यूज 11 11 हो गई हैं. अगर इतने ਅਸੀਂ पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर लईए, अगर इससे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करांगे तब a ਦੀ वैल्यू 11 हो जाएगी क्योंकि बाद चो इंक्रीमेंट हो गया, और b ਦੀ वैल्यू 10 ही रहेगी. So this is the basic difference. समझ आ गया बच्चे? जिसने पूछा थी ओके फाइन. ओके, एक छोटी जी हुन एक्सरसाइज करते हैं, जरा ध्यान नाल इसनु देखना है, समझना है. If a plus plus is equal to 11 or plus plus a is equal to 12, see out true. A else see out false. A and that. कोई बताएगा बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? एनीबडी? ट्रू सर. Who's saying this true? Jagdeep. Okay. Anybody else? ट्रू Okay. ट्रू सर. जगदीप रीजन दसोगे ट्रू क्यों आएगा बच्चे? सर एक ट्रू है सर, केड़े एक वाला फॉल्स ट्रू है सर. केड़ा ट्रू है केड़ा फॉल्स है? सर ए सर फर्स्ट वन ट्रू है सर, सेकंड वन फॉल्स है. बच्चे फर्स्ट वाला ट्रू ए कितना होया? फर्स्ट वाला ट्रू कितना होया? फर्स्ट ਦੇ सर ਵਿੱਚ a पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है. पोस्ट इंक्रीमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 10 is equal to 11. Is it true? 10 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ Sir, ਵੈਲਿਊ yes. ਹੋਏਗੀ 10 है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना. so 10 Yes, is sir. equal to 11 क्या हाँ जी, ट्रू है? नहीं है ना, ट्रू फॉल्स हो गया है. False है, yes false. sir. फॉल्स हो गया ना. उस तो बाद इस एक्सप्रेशन तो बाद
ਕਿਉਂਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ 11 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 11 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, prefix ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ 12 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 12 is equal to 12 true, so it will write true a। देखो बेटा क्लियर है? yes sir ओके, अगर इथे कर दिए प्लस और इथे कर दिए प्लस प्लस, फिर क्या होएगा बच्चे? एनीबडी? ट्रू है या फॉल्स है एंड ए दी वैल्यू क्या है, दोनों चीजें दसनियां है। ट्रू दोनों दोनों ट्रू बच्चे, दोनों ट्रू तो ठीक है, एक्सप्रेशन आंसर अपन इन टोटलिटी देखना है, टोटल एक्सप्रेशन देखना है। आंसर true है ट्रू, नहीं। आंसर ट्रू है, पर फर्स्ट वन ट्रू है, सेकंड वन इज फॉल्स एक्सप्रेशन। ओके, ए दी वैल्यू कितनी होएगी? फिर ए फिर ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 11 ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ 12 ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। बेटा देखो, ट्रू है ये तो मैंने मान लिया, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ए ट्रू है ये मान लिया, पर ए दी वैल्यू कितनी होएगी ये भी नाल दसो ना, फाइनल वैल्यू क्या होएगी? 11 12 ਤੇ ਫਾਈਨਲ 11 ਹੋਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਸਰ। 12 ਹੋਗੀ। ए दी वैल्यू 12 होएगी। चलो ਆਪਾਂ डिस्प्यूट्स नहीं करते, ਆਪਾਂ एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं, then I'll explain it to you। ट्रू 11 आ रहा है, ओके, इसਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। और ਦੇ केस है ना, और ਦੇ केस ਵਿੱਚ क्या है, अगर फर्स्ट ट्रू हो गया तो सेकंड इवैल्यूएट ही नहीं होएगा, समझ गए बेटा? if first expression is true, second will not be evaluated, क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ true ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ true ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ second evaluate ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। clear ਹੋ ਗਿਆ? is this thing clear to you? yes sir हाँ, ਯੈਸ ਸਰ फर्स्ट ट्रू है इस करके सेकंड ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? एंड का मतलब है दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होने चाहिए, इज दैट ट्रू और नॉट? है ना, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होने चाहिए, एम आई राइट? यस सर ਯੈਸ ਸਰ ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका? और 12 क्लियर नहीं सुनिया बच्चे, दोबारा ਟਰੂ बोलो। 12 ट्रू 12, टू एनीबॉडी और एल्स? 12 ट्रू 12। 2 and 12 ਟਰੂ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। दिस इज ट्रू, ए दी वैल्यू 10 है, प्री इंक्रीमेंट करके वो 11 हो जाएगी और 11 इज इक्वल टू 11, ये ट्रू हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, 11 is equal to 12, it is false। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ दोनों ट्रू होने चाहिए सी, दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ false हो गया तो it will evaluate to false, पर क्योंकि a एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होया है इस तो बाद a ਦੀ वैल्यू 12 हो गई, so it will write false 12। कुछ एक क्लियर होया कि नहीं? वैल्यू Yes, sir. 12 कैसे आ गई? हाँ बेटे, आई टोल्ड यू फर्स्ट ट्रू है, एंड ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ क्या होएगा, अगर फर्स्ट ट्रू है ਤਾਂ ਹੀ सेकंड इवैल्यूएट होएगा। ओके, फर्स्ट is true in this case, a is 10, because of pre increment it will become 11, 11 is equal to 11 true, ਤਾਂ ਇਹ सेकंड ਤੇ जाएगा। now a is 11, this is post increment, so a 11 is equal to 12, ये false हो गया ना, पर a एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होया है इस करके false इवैल्यूएट होने तो बाद a दी वैल्यू 12 हो गई, that's why it is giving us this result false 12। ओके, अगर इसमें चेंज कर दिए थोड़ा जा, फर्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स? false
false है. False. In case of and, if first expression is false, second will not be evaluated. क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए सी, पहले ही फॉल्स हो गया तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है. सो सेकंड पे ही जाएगा ही नहीं, ये लिखेगा फॉल्स 11. ये क्लियर हो गया बेटा? किसी ने कोई डाउट है? सर 11 की मैं वैल्यू हाँ जी बेटा देखो. हो गया फर्स्ट मैं मेरी व्हाट आई एम सेइंग उसमें ध्यान ਨਾਲ सुनो. व्हाट आई एम सेइंग इज एंड द केस ਵਿੱਚ दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होने चाहिए. अगर फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕंड ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, a पोस्ट इंक्रीमेंट है, इट मींस पहला a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ. 10 11 ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, a इंक्रीमेंट हो जाएगा, a हो गया ਹੁਣ 11. सेकंड ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਫਾਲਸ 11. इज इट क्लियर प्रेरणा? यस सर. ओके बच्चे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ कनेक्ट करना. ओके 40 मिनट्स ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ डिस्कनेक्ट होएगा, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ कनेक्ट कर लेना.